Assalamualaikum students. How are you students? Hope you all are fine. Students, here are your computer teacher Miss Kubra Saeed from Metropolitan Foundation School. Happy Independence Day students. Hope you all are enjoy your Independence Day with more and more happiness. Now students, it's work time. I hope you all are complete your June-July work and also assessment paper with neat and clean writing. Students, your June-July work has been completed. Now we started the work of month of August. Students, now first you make a tidy title page of month of August. Okay students, now open your book, page number 15. In this video, I will explain you chapter number 3, starting and shutting down the computer. Okay students, let's start. You have learned about the different parts of a computer. In this lesson, you will learn how to switch on and switch off the computer, or how to start and shut down the computer. First heading is starting a computer. Students, to start a computer, observe the pictures and follow these instructions. You see a picture. Number 1. To start the computer, you follow these steps. Number 1. Switch on the main power supply button. You see the power supply button? Yes. Step number 2. Press the UPS button to switch it on. Students, you see the UPS? Yes. Step number 3. Press the button on the CPU to switch it on. Students, you see the CPU? Press the button on the CPU to switch it on. Step number 4. Press the button on the monitor to open its display screen. Step number last 4 जो है वो step number last है, और ये क्या है? Press the button on the monitor to open its display screen. Last step is press the button on the monitor. Okay students? Students, here are the pictures of starting the computer. You see the pictures. Number 1, switch on the main power supply button. Number 2 picture shows press the UPS button to switch it on. Number 3 picture shows press the button on the CPU to switch it on. And number 4 picture shows press the button on the monitor to open its display screen. Okay students, now the screen of your monitor appears as shown. The screen is called the Windows desktop. It shows that the computer is ready for you to start your work. Students, you see the small pictures on the Windows desktop. There are small pictures on the Windows desktop. These are called icons. You can see a small button on the bottom left corner. You see? Okay, this is called the start button. You can also see an arrow like pointer on the screen. You see the arrow? Students? Okay, this is the mouse pointer. What is this called? This is called mouse pointer. You will learn more about the desktop and its components in higher classes. Students, आप लोगों को समझ आ गया कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है. हम लोगों ने रीडिंग की, पिक्चर्स देखी. नाउ आई रीड हाउ टू शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क you need to turn off your computer. To turn off, follow the steps given below.
स्टूडेंट्स, जब आप कंप्यूटर पर कोई भी अपना वर्क कर रहे हैं और जब वो वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कंप्यूटर टर्न ऑफ करेंगे, आप लोग शटिंग डाउन करेंगे। तो उसके भी स्टेप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के स्टेप्स पढ़े थे, इसी तरह शटिंग डाउन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, मूव द माउस प्रिंटर टू द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन इट। Number 2, click on shutdown option from the start menu. After a while, the CPU will turn itself off. Students, to shut down the computer completely, continue with the following steps. Students, you see the 3 steps. जब आप लोग कंप्यूटर को शट डाउन के जो की है वो प्रेस कर देंगे, नाउ ये 3 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। फर्स्ट, स्विच ऑफ द मॉनिटर, सेकंड, स्विच ऑफ द यूपीएस एंड देन थर्ड, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। स्टूडेंट्स, डू यू नो द कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन यू शट इट डाउन प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन किस तरह करते हैं, स्टेप्स देखिए। नाउ द थर्ड हेडिंग वी हैव स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, यू नो लैपटॉप इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अ लैपटॉप डज नॉट हैव अ सेपरेट CPU और UPS। लैपटॉप के पास अपना सेपरेट CPU और UPS नहीं होता है, CPU के बगैर होता है लैपटॉप। To start a laptop, press the power button on the laptop. The laptop shows the desktop screen after a while. ये है लैपटॉप स्टार्ट करने का मेथड। To shut down a laptop, click on the start button on the desktop. Then click on the shutdown option from the start menu. The laptop will shut itself down. If the laptop is connected to the main power supply, then switch off the power supply and remove the cable. आप लोगों को समझ आया स्टूडेंट्स? ये चैप्टर हम लोगों ने इसमें 3 हेडिंग्स पढ़ी, स्टार्टिंग द कंप्यूटर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ लैपटॉप। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब कंप्यूटर नहीं लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये लैपटॉप की स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन भी यहाँ पर दी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्टिविटी टाइम। ओपन योर कंप्यूटर कॉपी एंड डू दिस एक्टिविटी। योर एक्टिविटी इज पेज नंबर 18 of your book. Then start. Help Rashida to number the steps of shutting down a computer correctly. हमें यहाँ पर आपको रशीदा दिख रही है, हमें इसकी हेल्प करनी है। स्टेप्स टू नंबरिंग द स्टेप्स ऑफ शटिंग डाउन। ओके, नाउ नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स दिए हुए हैं और आगे ब्लैंक बॉक्सेस हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 1 जो है वो 3 जो आप देख रहे हैं, मूव द माउस पॉइंटर टू द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन इट, ये डन हुआ है। उसके बाद हमें बाकी के स्टेप्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स, turn the page of your page number 17, shutting down a computer. It helps to Rashida. To shutting down a computer, first step is move the mouse pointer to start button on the desktop and click on it. Now students, where is this point? Yes, number 3, move the mouse pointer to the start button on the desktop and click on it. Students, you write 1 in this box. 3rd is a step number 1. 3rd sentence is a step number 1 of shutting down a computer. Now turn the page.
Step number 2 is click on shutdown option from the start menu. Where is this option? Students, see number 5 sentence on page number 18 activity. Click on shutdown option from the start menu. This is the second step of shutting down the computer. Number 5th sentence is the second step of shutting down a computer. Okay, you write 2 in the box. You write 2 in the box. Number 3rd step is switch off the monitor. Where is number 3rd step? See number 4 sentence of your activity, switch off the monitor. Number 4 sentence is the 3rd step of shutting down the computer. Students, आपको समझ आ रहा है? Number 4 sentence is 3rd step of shutting down the computer. Now you write 3 in the box of 4 sentence. Switch off the UPS. 4th step is of shutting down the computer is switch off the UPS. We see number 2, we see in the activity number 2 sentence, switch off the UPS is the 4th step of shutting down a computer. Now you write 4 in the box of sentence 2. मैं फिर दोहरा रही हूँ. Number 2 sentence is the 4th step of shutting down a computer. You write 4 in the box. Then last, what is the last step? Switch off the power supply. You see, number 1 sentence shows the 5th step of shutting down the computer. Switch off the power supply is the last step of shutting down the computer. Now you write the 5 in the box of first sentence. Students, you see, we done these steps correctly. You also done these steps correctly in your copy. Now students, do this work with neat and clean writing, reading this chapter with more and more attention. Okay, Allah.